right? And then we move on. Failure in excess committed by the officer or police authorities. उनके सामने अगर किसी ऑफिसर ने अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से ज़्यादा जाके काम किया है तो फिर उसके लिए भी वो रिकमेंडेशन देगा टू द सुपीरियर्स कि दिस इज़ वेयर ही हैज़ ट्रांसग्रेस्ड हिज लिमिट्स एंड देन ही शुड बी स्टॉप्ड इन दिस वे. देन सेक्शन ये सबसे इस पूरे 22 AB को जब देखेंगे तो इसमें पढ़ने वाला सेक्शन A6 ही है. ठीक है, आप में सारे दोस्त हैं, लॉयर्स हैं. इट्स नॉट ऑल अबाउट लेक्चरिंग. ऑब्वियसली यू गाइस आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ द बार, सो यू नो ऑल दीज थिंग्स इन अ वे. लेकिन पढ़ने वाला इसमें सेक्शन जो है वो A6 है. टू सीक डायरेक्शन to police a concerned officer regarding his inappropriate behavior, maladministration, whatever you may call it. B जो है is distinguishable, a bit distinguishable from A6. A6 deals with directions. B deals with duties. Duties क्या हैं justice of peace की? Number 1, furnish inquiry. As I already said, मैंने इसको कनेक्ट किया था. what the inquiry is, court does inquire, और ट्रायल कर लेगी या इंक्वायर करेगी. ठीक है. सो बी के तहत ही फर्निशेस इंक्वायरी, और जब उसकी रिपोर्ट देगा अगर कोई होता है इशू, he would furnish a report to the इलाका मजिस्ट्रेट. यहाँ पे मैंने नहीं सुना कभी इलाका मजिस्ट्रेट को भी रिपोर्ट देते हैं. एंड देन टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो भी उसने कंक्लूड किया है, इंक्वायर किया है, देन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को उसको रिपोर्ट देनी है. बट दिस बेसिकली डील्स विद इज इंक्वायरी, इन्क्विस्टिक पावर्स. किसी को बुला सकता है, किसी से पूछ सकता है. दिस इज हाउ रिपोर्ट्स हैव बीन समन्ड. 22 AB में इट्स नॉट मैंडेटरी टू समन रिपोर्ट्स. नो, 22 AB में लफ्ज़ जो यूज़ किया गया है वो मे का है. ही मे or may not. He would apply his mind on that application and decide without reports. Go ahead. Simple as that. But he may summon the report. नीचे से रिपोर्ट बुलवाएगा. इसकी रीज़न क्या है? 22 AB में नोटिस नहीं होते टू अक्यूज्ड साइड को. समन एंड नोटिस नहीं होते. आई प्रेफर, मेरी अपनी ये ओपिनियन है कि रिपोर्ट मंगवानी चाहिए. उससे क्या होता है, नीचे पुलिस आई, पुलिस ने दोनों पार्टी को बुलाया, सुना, कुछ ना कुछ तो किया ना, कुछ ना कुछ तो किया. उसने फाइंडिंग दिस साइड को देखा, दिस साइड को देखा, जो भी ओपिनियन दी है, रिपोर्ट मुरतब करके कोर्ट को जमा करवा दी. अब कोर्ट पे दैट रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग इन एनी वे. यस, लॉ इज देयर डेवलप्ड टू दिस एक्सटेंट दैट यस, the court, the justice of peace, should give due weight to that report, cannot brush aside that report straight away. Number 1. Number 2, वो बिल्कुल उस पर बाइंडिंग भी नहीं है. That's not binding on him. It is all his discretion, and discretion is controlled by what? His own skills of law. Whether information given in those documents make up a cognizable offense or not. The backbone of 22 AB is the one-liner. The information which has been given through that document make a cognizable offense or not. If it does, go ahead with that. And how he's going to make up that mind is that may be a report,
may be oral assertions, not any evidence attached with the file. Attached with the file. He make an independent opinion on the basis of that evidence, that material, and then FIR get registered. So to me, inquiry about inquiring, taking reports, taking any other evidence from any source which he likes or which is within his jurisdiction, then he can't go beyond his jurisdiction. Jurisdiction is defined under what? 22 को आप देखेंगे ना, सेक्शन 22 का जो पहला सेक्शन है, that defines its jurisdiction. ये बनाता कौन है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट. कहाँ पे आती हैं नोटिफिकेशंस? ऑफिशियल गजट में. वो नोटिफाई करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट that this person which is predominantly वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं जो हमारे, वो उसके पास ये पावर्स हैं. एंड देन there can be more than one justice of peace in a district. Yes, there can be more than one justice of peace in a district. It is up to the discretion of the provincial government what course they want to go by. Lahore में कितने हैं? It depends upon the territory, it depends upon the area, the population, the nature of crime, and number of factors. These powers have been conferred upon the provincial government to allocate, to appoint justice of peace the way they like, but discretion is controlled somehow. Then inquiry के बाद 22B में फर्दर जो चीज़ की, उनके किसी जगह पे अक्रंस हुई, he can safeguard उस लोकेलिटी को उसने प्रोटेक्ट करना है. वो मेजर्स ले सकते हैं. क्राइम सीन यूनिट्स हैं जैसे पुलिस के पास होते हैं, he has all the powers to protect that crime scene. उसके लिए इसके पास हैं seek assistance of the local police station. जो भी जिस साइड पे वकूआ हुआ है लोकल पुलिस स्टेशन से आप वो कर सकते हैं. बाकी कुछ इस पे डायस्फोरिक इंटरप्रिटेशंस हैं. नंबर ऑफ प्रपोजिशन बेस्ड लॉ है इस पे कि किस चीज़ पे आप इसकी पावर्स को डिफ़ाइन किया गया है. वेदर नंबर 1 जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि चालान सबमिशन के लिए क्या वो ऑर्डर कर सकता है? नो. चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ऑर्डर कर सकता है? नो. पावर ऑफ अटर्नी पे वो कॉग्निजेंस ले सकता है? नो. रिपोर्ट्स बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड मे हैज़ बीन यूज्ड. अगला जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इसका, व्हाट इफ ऑर्डर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस इज नॉट कंप्लाइड विद. हमारे बहुत से ऑर्डर आते हैं, पर्चे का ऑर्डर हो गया जी, फिर भी जस्टिस ऑफ पीस ऑर्डर नहीं कर रहा. व्हाट रेमेडी वी हैव? इसके नीचे 4 रेमेडीज हैं. नंबर 1, ही इज द हेड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कमीशन. सेक्रेटरी साहब हमारे बैठे हुए हैं, इनके पास सेक्शन आर्टिकल 110 एफ पुलिस ऑर्डर है. जस्टिस ऑफ पीस जो सेशन जज होता है, इसके नीचे DPO, DCO और बाकी जेल वाले, जेल सुप्रिटेंडेंट, प्रोसिक्यूटर, सदरवा, ये सारी एक टीम बनती है जिसे बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस कमीशन अंडर आर्टिकल 110. पुट द ग्रीवेंस. आपके बंदे नहीं मानते जी, बात मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने, सेकेंड रेमेडी इज अ मैजिस्ट्रेट. आस्क हिज मैजिस्ट्रेट to prosecute that person who is not complying with the order under section 166 of the PPC. Under section 166 of the PPC, he can ask to prosecute him. लटकाओ इसको, इस पे पर्चा दो. कोर्ट का ऑर्डर है 166 के, उसको मानता ही नहीं है. Number 3, he can ask a special judge anti-corruption to prosecute that person. एंटी करप्शन जज है, उसको कह देता है कि 155C और 166 के तहत से प्रोसिक्यूट करें. देन वो होपफुली दैट वुड रेमेडी द ग्रीवेंस.
There is no contempt proceedings. It's a very important and significant aspect of BICAB that there you can't lodge contempt proceedings against an individual. Defy कर रहा है एक order को court के को. Why? Simple reason is contempt इसमें ये judicial proceedings नहीं है. These are quasi-judicial proceedings. ठीक है, ये एग्जेक्टिव भी नहीं है एज सच, ये सुपरवाइजरी पावर्स नहीं है. These are administrative, kind of administrative and ministerial powers. Administrative and ministerial powers to create peace and harmony in the society. 3 रेमेडीज स्पेशल उसमें आ गई. अब एंटी करप्शन के हवाले से प्रोसिक्यूशन थ्रू अ मैजिस्ट्रेट है, एंड देन थ्रू उसके कमीशन के. If you got your BICAB dismissed through this court, then go to the writ jurisdiction. Mandamus 199, you may call it, read along with Article 4 of the Constitution. Article 4 says everybody has to be dealt in accordance with law. You got a cognizable offense, still your FIR has not been registered, so you are a grieved person. If High Court refuses the same, then what remedy you got? There is again conflict on that. Some says go to Supreme Court, some say go to ICA, Intra-Court Appeal, under Section 4 Law Reform Ordinance, उसके तहत आप जाएं. मैंने कंटेस्ट की हुई है कुछ ICS भी, BICAB भी. ऑब्वियसली हमारा काम फौजदारी का है, तो सिंगल जज इन चैम्बर उसने नीचे से खारिज हुई, हाई कोर्ट से खारिज हुई, एंड देन इट गोज इन टू माई अंडरस्टैंडिंग गोज टू द ICA. रैशनल क्या है, व्हाई इट इज़ सो? सिंपल रीज़न, आपको मैं गुर की बात बताऊं, जिसके खिलाफ नीचे अपील नहीं है, जिस बंदे ने अपील रेमेडी अवेल नहीं की हुई, he can go to the ICA under Section 4. बहुत से ऑर्डर ICA में नहीं जाते, फैमिली मैटर है, नीचे से फैमिली कोर्ट says something, goes to the appeal, and then हाई कोर्ट आपके खिलाफ चला जाता है, go to Supreme Court. ICA is not maintainable. Once you have availed the remedy of appeal, you can't go in ICA, intra-court appeal. So remedy of appeal once during the proceedings. Justice of peace, no appeal there. Justice of peace order, writ jurisdiction, and then go to the IC under Section 4 Law Reform Ordinance, avail that remedy, and then if not, go to the Supreme Court under Section 184. उसके तहत आप ऊपर भी जा सकते हैं. Article 184. It starts with 184, it goes to 187, appellate jurisdiction, concurrent different type supervisory jurisdiction of 184. इस 3 में सुमोटो आता है, बाकी पहले और आते हैं. सुप्रीम कोर्ट की 4 किस्म की jurisdiction है. Now few things, diasporic, इसमें ये चीज़ें हैं. बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? Now significant cases, अगर किसी ने बाई से भी सही समझनी है तो 2-3 केस समझ लें बस. ठीक है. नंबर 1 खिजर अयात केस 2005 PLD 450. PLD 2005, ये लाहौर की है. 450 पुत्र आना मैं वो किसे करने दी. आपने पढ़ी हुई, किसी ने पढ़ी? अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं वो जजमेंट भी डिस्कस कर देता हूँ, नहीं है तो फिर मैं ख़त्म कर देता हूँ. मेरा आइडिया सर जो बोलो कि हम कुछ लेक्चर्स लेके फिर वैसे वर्षा नो वरीज. राइट. खिजर अयात केस नंबर 1 फॉर द क्लैरिफिकेशन. फिर इसमें दूसरी जजमेंट है
जो पढ़ने वाली है वो PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 691 PLD, ये लैंडमार्क जजमेंट है उस पर 2010, ये PLD से स्टार्ट होती है, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 691. It says if you 691 691, it says when you get sufficient adequate remedy in the shape of private complaint, that will come in the writ jurisdiction. Writ jurisdiction की basic 3 ingredients हैं. You have to be aggrieved. Yes, you are. In case of buy say भी, you have no adequate alternate remedy. But here you are stuck. रेट में जाना है, मैडमस में जाना है या सर्शियरी में जाना है. कोवरेंटो में ये कंडीशन नहीं है. यू हैव एनीबडी कैन बी एग्रीव्ड, क्योंकि आप अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं कि ये किस तरह का इलेक्शन कमीशन या कोई अथॉरिटी बैठी है विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, वो कोवरेंट होती है. यू हैव टू बी एग्रीव्ड, यू डोंट हैव एडुकेट अल्टरनेटिव रेमेडी एंड दैट हैज़ टू बी अगेंस्ट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये 3 बेसिक चीज़ें हैं रिट में. 2020 की एक जजमेंट आई है, उसमें ये तीनों चीज़ों पोस्टुलेट की हुई हैं. हाउ रिट इज़ मेंटेनेबल. हमारे बहुत से दोस्त हाई कोर्ट में जाते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा, डॉक्टर तलत हैं एक, अभी मैं एक रिसेंटली एक बुक रीड कर रहा हूँ रिट जुरिसडिक्शन पे, 160 या 70 पेजेस बुक है. मस्ट रीड अ बुक फॉर एनीबडी डूइंग हिज प्रैक्टिस इन लॉ इन रिट जुरिसडिक्शन, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है वो. खिज़र याद केस, इसके बेसिकली 10-11 पॉइंट्स हैं. इफ़ यू अलाउ मी, अगर बोर हो गए हैं तो फिर खिज़र याद केस ही ठीक है. नेक्स्ट इज सुगरा बीबी केस. ऑल यू कैन डू इज 581 2018 सुप्रीम कोर्ट 581. You can register only one FIR. Only one FIR. Imran, it could be Imran Khan case. Same happened in that. He gives his own version. First, the FIR has been registered. Then there is no scope for the second FIR. Same happened in Model Town case. Model Town case में क्या हुआ? पुलिस ने एक अच्छी झूठी सच्ची जैसी भी वो FIR लॉन्च की, उसके बाद असल वर्शन आया ही नहीं. Same goes to the Imran Khan case. One FIR has been lodged by whosoever it may be. There is no requirement under 1654 that who should be the informant. You don't need to be aggrieved. Anybody, any person, anywhere you got an information, reduce into writing, and then oral हो, written हो, FIR हो गई. आगे जाएगी investigation. Once the FIR has been done, then start investigation, start collection of evidence. It could be in any shape. वर्शन आए 161 के 164 के, जो वर्शन भी आया मैजिस्ट्रेट के सामने in the shape of 164 और any other version, cross version, then वो उसके रिकॉर्ड करें. Another significant factor, whether you can register your cross version, yes, you can do through justice of peace. If the police officer say, I got this FIR on the assertion of the prosecution or the complainant, he is a complainant of the case, I can't register your cross version that you can come to the justice of peace. I've done it. Many prepositions. If he refuses, then go to high court. ये मेरा वर्शन है, सच्चा है, झूठा है, जो भी है, but you got कि आपका एक इशू है, that version has to be recorded in any way. झूठा होगा, खारिज हो जाएगा. प्रोसिक्यूशन का कंप्लेनेंट का वर्शन स्टैंड करेगा, आपका खारिज हो जाएगा, जी इनका क्रॉस वर्शन हमने but you can't stop that version. The police officer can't stop that version from coming on record.